merciful, supreme, and powerful. I am Mansoor Hassan, English language teacher at Oxford Education Academy, Bathela, and our today's topic is conjunction and interjection. So, what is conjunction? A conjunction is the glue that holds words, phrases, and clauses together. Or we can say a conjunction is a part of speech that is used to connect words, phrases, clauses, or sentences. Conjunction zamsur aga word de aga lafz de chi aga saki aga zamsur nor words, phrases, clauses या sentences च कम दे योजे कई. That is a glue कार के दो मुख्तलिफ words या दो sentences या clauses, phrases द आगे मंस की द glue कार की आगा words च कम दे योबल सरा connect कई. Types of conjunction: coordinating conjunction, correlative conjunction, subordinating conjunction. The three types of the conjunction उसको one by one चिकम दे यो explain को. First one, coordinating conjunction. Join equal parts of a sentence. The sentence equal parts चिकम दी आगा join कई और दिला पारा मुंगा चिकम दे acronym fan boys इस्तेमाल हो. Fan boys mean F for and, nor, but, are, yet, so. The conjunction which comes commonly used is a coordinating conjunctions. Examples of coordinating conjunction: I go to library for I love to read. Is this gift for me or someone else? The food is hot and delicious. Asad ignored the food, so I got a spoon and ate it myself. नूस पदी हारे सेंटेंस के तासु ख्याल के नु दाची कम दे इक्वल पार्ट्स. आई गो टू लाइब्रेरी, आई लव टू रीड. दो इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दी या दो इक्वल सेंटेंसेस दी और द दे द कनेक्ट को लो पार मुंगा फॉर च कम दे आगा इज अ कंजंक्शन यूज करे. इज दिस गिफ्ट फॉर मी और समवन एल्स? इज दिस गिफ्ट फॉर समवन एल्स और फॉर मी? द मी और समवन एल्स दोन च कम दी इक्वल मीनिंग वर्क नु दी के च कम दे मुंगा और इज अ कंजंक्शन यूज करे. एंड आल्सो पदी नोर सेंटेंसेस की. Correlative conjunction used in pairs. Correlative conjunction आगे ची आगे पर पेयर की यूज़ की दो conjunction जमुसर पर यो sentence की यूज़ की. Common correlative conjunction जमुसर दी either or are, neither or nor, both and, not only but also. That they use in sentence. He may buy either a laptop or a camera. She likes neither tea nor coffee. Both the pink and the blue are nice colors. She is interested not only in singing but also in games. Correlative conjunction के बस विच जमुसर पेयर ऑफ कंजंक्शन चिकम दे आगे पर यो सेंटेंस या यो फ्रेज की चिकम दे आगे इस्तेमाल की संगता उस पर दे एग्जांपल्स की कतेशन उन दे तमंगवाई correlative conjunction. Subordinating conjunction. The subordinating conjunction shows the relationship between the two clauses. Subordinating conjunction मुझे सकी द दो clauses मंस के चिकम relationship ते आगा मुतज़ाहिर है. चिकम commonly use की गी subordinating conjunction आगा दी then, as much as, whatever, after, before, rather than, whereas, which, as soon as, by the time, whether, that, whichever, as long as, by the, etc. Examples of subordinating conjunction: we went to zoo where we saw an elephant. नुदी किसी की द्वानो sentences चिकम दी या द्वानो phrases चिकम दे मुक्ता relationship खी चला यो sentence दे बल सरा से relationship दे. I will help whenever you need my help. ज़बस्ता मदद कुम चिकलम स्तात मदद ज़रूरत हो. नुदा whenever द दिल पार यू शेवेज द दे पहले sentence द द्वेम सरा से relation दे. All the shops were closed. टोल दुकानों न बनो because it was locked down. ज़कची लॉकडाउन दुकानों न वली बनो ज़कची लॉकडाउन उन पदी के मुताद सेकंड सेंटेंस कम दे फर्स्ट आगा इशू जी कम दे आगा क्लियर की याद दे रिलेशन खंड दे लपार मुंगा दा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करे. इट मेक्स मी हैप्पी व्हेन यू लाफ. ने द्वानो मंस की कम दे क्लोज रिलेशन दे और चिकलेदार रिलेशन मुंग ज़ाहिर वाल वाडुन दे लपारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हो. Second topic, interjections. What is an interjection? An interjection is a word that expresses emotion and has no grammatical relation to the other words in the sentence. Interjections that show strong emotion are followed by an exclamation point, and interjections that show mild emotion are followed by
अकामा इंटरजेक्शन चिकम दा मुक्ता इमोशंस चिकम दी अगर ज़ाहिर एक्सप्रेस कई और ग्रामेटिकल रिलेशन दी द नोर वर्ड सरा नवी इंटरजेक्शन चिकम मुक्ता स्ट्रॉन्ग इमोशन ज़ाहिरी दागे लपार मुक एक्सक्लेमेशन पॉइंट एक्सक्लेमेशन मार चिकम दी अगर यूज़ को दागे मखिता और चिकम जम सरा दसी स्ट्रॉन्ग इमोशन न ज़ाहिर बल्कि इमोशंस भी खुद स्ट्रॉन्ग नवी आगे नंबर के चिकम दे मुंगा कॉमन लगो एग्जांपल्स की गोरे interjections common interjection well ouch wow oh etc example well I just don't know ouch that hurt no चिकम दिस स्ट्रॉन्ग इमोशन दकी संगता सोमा डेफिनेशन के विन आगे मखता मुंगस एक्सक्लेमेशन मार्क लगो और चिकम जनरल विन आगे तमुंगा कॉमन लगो I hope you have understood the topics. We have completed to be all the parts of speech, and next topic will be about tenses. So if you have any question or you are facing any difficulty about parts of speech, so you can ask me every time. Thank you so much.